सबसे पहले समझिए इस समझौते की सबसे बड़ी बात। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने साझा संयुक्त सैन्य समझौते पर सहमति जताई। मतलब अगर तीनों में से किसी एक भी देश पर सैन्य हमला हुआ तो ये उन तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमला होते ही तीनों देशों की सेनाएं सीधे युद्ध में उतर आएंगी। हमले की स्थिति में तीनों देश आपस में बात करेंगे और तय करेंगे कि किस तरह से कितनी मदद देनी है। मतलब एक पर हमला यानी तीनों की सुरक्षा का मामला। लेकिन जवाब का तरीका परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब सवाल है, अचानक इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो जवाब है पश्चिम एशिया का बदलता सुरक्षा तंत्र। सऊदी अरब अब पिछले कुछ समय से खुद को ऐसे क्षेत्रीय टकराव में फंसा हुआ देख रहा है जिसे उसने शुरू नहीं किया, लेकिन उस पर ईरान ने अटैक किया, हुथियों ने हमले किए। ईरान और अमेरिकी युद्ध के दौरान उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। खाड़ी में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले ने रियाद की चिंता बढ़ा दी। अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में जुटा है। रियाद का संदेश बिल्कुल साफ है कि वो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं रह सकता। और इसी बैकग्राउंड के बाद सामने आया मक्का एग्रीमेंट। नए गठबंधन की सबसे खास बात है कि तीनों देशों की मिलिट्री ताकत अलग अलग है। तुर्क की वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग 90वें नंबर पर है, पाकिस्तान की 14वें और सऊदी अरब की 25वीं रैंकिंग। लेकिन तुर्की नेटो का सदस्य है, एक बड़ी मिलिट्री ताकतों में से एक है और दुनिया में तेजी से बढ़ता डिफेंस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है। तुर्की के पास ड्रोन है, उसकी नौसेना है, ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। इलेक्ट्रॉनिक और ड्रोन वॉरफेयर में अपनी ताकत वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत इन तीनों देशों ने ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, प्रोडक्शन और सहयोग की बात कही है। दूसरा देश है पाकिस्तान। सैनिकों के मामले में इनसे आगे है, उसके पास वॉर एक्सपीरियंस है, साथ में न्यूक्लियर ताकत भी पाकिस्तान रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरब या तुर्की तक पहुंच पाएगी? मक्का एग्रीमेंट में न्यूक्लियर हथियार को लेकर कोई साझा ऐलान नहीं हुआ है, न ही कोई न्यूक्लियर ताकत बनने की महत्वाकांक्षा की बात सामने आई है। और मक्का डील में 3 देश हैं, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। डील के तहत एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। तो क्या निशाने पर ईरान है? बिल्कुल भी नहीं। ईरान खुद इस डील का समर्थक है, तो क्या टारगेट इजरायल है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस डील का तीसरा पिलर सऊदी अरब है। तेल, पैसा और मक्का मदीना की वजह से ये तीनों के लिए धार्मिक अहमियत भी रखता है। यानी तीनों की ताकत को एक लाइन में रखें तो क्या तस्वीर बनेगी? तुर्की की मिलिट्री टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता और सऊदी अरब की आर्थिक ताकत। और इस डील में इसी कॉम्बिनेशन की तस्वीर सामने दिखती है। लेकिन क्या ये तीनों मिलकर कोई नया इस्लामिक नेटो बना सकते हैं? क्या ये तीनों मिलकर ईरान के हमलों का सामना कर सकते हैं? क्या तीनों को मिलाकर इनकी ताकत नेटो के बराबर हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तिकड़ी आखिर बनी क्यों है और ये तिकड़ी आखिर किस पर निशाना है? मिडल ईस्ट में जो जंग या टकराव चल रहा है उसके हिसाब से सबसे आसान जवाब है ईरान। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा किसी देश को ईरान से खतरा है तो वो है सऊदी अरब। लेकिन तुर्की साफ कह चुका है
कि ये एग्रीमेंट ईरान या किसी खास देश को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन एग्रीमेंट में साफ कहा गया कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो तीनों देश साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बिना कुछ बोले ईरान भी इस समझौते का समर्थन कर रहा है। ईरान कह रहा है कि इजराइल की फैलाई अस्थिरता के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसके साथ वो खड़ा होगा। اعلان دروغین امنیت نیست. امنیت در منطقه حتما تفکیک ناپذیر هست و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه इजराइल के लिए भी ये समीकरण नजरअंदाज करने वाला नहीं है। तुर्की के साथ इजराइल के संबंध पिछले कुछ समय से बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ तुर्की की साझेदारी इस पूरे समीकरण को बदल सकती है। तो असली सवाल अब भी वही है कि आखिर ये तिकड़ी किस देश के लिए खतरा है। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई। राहुल गांधी के छात्राओं की गूंज कार्यक्रम का चौथा एडिशन इस बार पुणे में होने जा रहा है, जो कि 22 अगस्त को होगा। इस बार कार्यक्रम जेन जी छात्राओं को संबोधित करने के लिए रखा जाएगा। राहुल गांधी छात्राओं से आधी आबादी और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर सीधे संवाद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के पीछे जेन जी छात्राओं और आधी आबादी से कनेक्ट, बीजेपी के महिला आरक्षण के दाव की काट और उच्च शिक्षा में छात्राओं के बढ़ते ड्रॉप आउट रेट को मुद्दा बनाने की वजह सामने आई है। हाल ही में महिलाओं से जुड़ी राहुल गांधी की इंस्टाग्राम रील भी वायरल हुई थी। कार्यक्रम में पिंक थीम का इस्तेमाल किया जाएगा, यह भी जानकारी सामने आई है। पुणे जा रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं के साथ, गर्ल्स के साथ एक स्टूडेंट इंटरेक्शन उनका, क्योंकि राहुल जी हमेशा जानते हैं कि जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, बराबर की साझेदारी होनी चाहिए। और इवन सिर्फ एजुकेशन में नहीं, जॉब्स में, पॉलिटिक्स में राहुल जी चाहते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में, क्योंकि उनका मानना है और देश का मानना है जब तक महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक सभी महिलाएं जितनी है उनकी आबादी के साथ उसके हिसाब से वो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और दिल्ली के बुराड़ी में एक सूटकेस से लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अजीत बिहार इलाके से पीसीआर कॉल मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर सूटकेस के अंदर लड़की का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की की कथित तौर पर रविवार को हत्या की गई थी और उसके बाद शव को सूटकेस में बंद कर फेंक दिया गया। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि लड़की को कुछ दिन पहले बिहार से दिल्ली लाया गया था। पुलिस फिलहाल हत्या की वजह जानने की कोशिश कर रही है। तो वहीं सूरत के एक होटल में रिसेप्शन पर खड़ा हुआ युवक कुछ ही सेकंड में जिंदगी की जंग हार गया, जिसका एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि डिंडोली इलाके के एक होटल का बताया गया। वीडियो में युवक रिसेप्शन पर सामान्य बातचीत करता हुआ दिखाई दिया और फिर अचानक ही बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उसकी मौत हो गई। घटना के बाद होटल में अफरा तफरी भी मच गई। ये तस्वीर सामने आई है, तस्वीर आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज देखिए। इसमें ये व्यक्ति, ये शख्स बात कर रहा है रिसेप्शन के इस पार खड़े होके, और अचानक ही वो गिर पड़ता है, बेसुध हो जाता है। इससे पहले कोई कुछ भी समझ पाता, इस शख्स की मौत हो गई। चंद सेकंड का खेल था और जिंदगी की जंग ये हार गए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश के बाद उफान पर आई बीन नदी में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश कर रही एक गाड़ी अचानक से बह गई, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार 2 लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची। उफानी नदी के तेज बहाव के बीच फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू के सामने आए तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी का बहाव कितना ज्यादा तेज था और उसमें फंसे लोगों को किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू किया गया है, उनकी जान बचा ली गई। तो तेज बहाव में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार
उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। रात का वक्त है और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर देवदूत बनी और सुरक्षित इन दोनों लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है। लेकिन उफनते नाले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं, अपने आप में तेज बहाव है। और जैसे ही यहाँ पर टीम पहुंची उसके बाद आप देखिए कितनी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इन दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो बारिश ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत की पोल खोल दी है, क्योंकि ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर के जिला अस्पताल का है। यहाँ पे तेज बारिश के बीच में जिला अस्पताल के आईसीयू की छत से पानी टपकने लगा। हालात ऐसे बन गए कि मरीज का बिस्तर तक भीग गया और पानी रोकने के लिए वार्ड में बाल्टियां रखनी पड़ी। वायरल वीडियो में आईसीयू में भर्ती मरीज भीगे हुए बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दिया, जबकि कुछ बेड पर बेडशीट तक नजर नहीं आई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब आईसीयू जैसा इमरजेंसी वार्ड ही बारिश में सुरक्षित नहीं है, तो अस्पताल की व्यवस्थाओं और रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और गुजरात के द्वारका में समंदर की प्रचंड लहरों के बीच एक युवक खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो द्वारका के गोमती घाट का बताया जा रहा है, जहां पर समुद्र में 10 से 15 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। लेकिन बावजूद इसके युवक जान की परवाह किए बिना घाट के किनारे मस्ती करता हुआ नजर आया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लहरों का जोरदार थपेड़ा युवक को करीब 5 फीट पीछे तक धकेल देता है। फिर भी वहां से हटने के बजाय वहां पर ये युवक जो है स्टंटबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बारिश के मौसम में प्रशासन लगातार लोगों से समंदर के किनारे ना जाने की अपील कर रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें जो है यहाँ पर समंदर की उठ रही हैं। लेकिन आप देखिए बिना जान की परवाह किए बिना ये जो शख्स है वो रीलबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। तो समंदर में 15 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन स्टंटबाजी का खुमार आप देखिए। लगातार समंदर से दूर रहने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बावजूद इसके आप देखिए इस समंदर की लहरें उठती हैं, ये लहरें इस युवक को पीछे धकेलती हैं, लेकिन ये शख्स जो है लगातार स्टंटबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। और सूरत में पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। गार्डेनिया रो हाउस सोसाइटी में दो परिवारों के बीच में पार्किंग और मेंटेनेंस को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद जमकर हंगामा और हाथापाई होने लगी, जिसमें एक परिवार पुलिसकर्मी का बताया गया। आरोप है कि पुलिसकर्मी के परिवार ने अपने पड़ोसी परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और धमकी भी दी। हंगामे और मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये गुजरात के सूरत की तस्वीर है। यहाँ पर पार्किंग को लेकर ये मामूली विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि महिलाओं के साथ में मारपीट तक शुरू हो गई आपस में। दोनों परिवारों में महिलाएं इसमें शामिल हैं। इस परिवार में कहासुनी देखते देखते बढ़ती चली गई। इसमें बताया जा रहा है कि जो एक परिवार है वो पुलिसकर्मी का परिवार है, दूसरा अपने पड़ोसियों के साथ में मारपीट करते हुए ये परिवार नजर आया है। ये जो विवाद था ये पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये देखिए किस तरीके से हाथापाई मारपीट दोनों परिवारों के बीच में शुरू हो गई। कुछ लोग वहां बीच बचाव करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन दोनों ही परिवारों के बीच में जमकर लात घूंसे भी चले। इराक से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर एक पेट्रोलियम डिपो में अचानक से आग लग गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा गया है। ये आग कुर्दिस्तान के सुलेमानिया इलाके के एक पेट्रोलियम डिपो में लगी थी, जहां पर आग लगने के बाद वहां पर तेज धमाके होने लगे। डिपो में पेट्रोलियम उत्पादों से भरे ड्रमों की वजह से आग देखते ही देखते विकराल हो गई। हालात को देखते हुए सिविल डिफेंस और फायर फाइटर्स की जो टीम है यहां पर मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि सुरक्षा बलों को लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील करनी पड़ी और उस इलाके को खाली भी करवाया गया है। लेकिन आग की लपटें आप देख पा रहे हैं, धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ऑयल डिपो में आग लगी, उसके बाद एक के बाद एक कई धमाके यहाँ पर हुए। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। और बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म प्रलय की शूटिंग मुंबई में शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए रणवीर सिंह अभिनय के साथ साथ प्रोड्यूसर के तौर पर भी नई पारी शुरू कर रहे हैं।
फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जिन्हें चर्चित वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के लिए भी जाना जाता है। प्रलय की कहानी मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें शानदार विजुअल्स के साथ गहरी मानवीय भावनाओं को दिखाया जाएगा। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ में अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। और अब आपकी सेहत से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। दूध और दूध से बनी चीजों में मिलावट करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। गाजियाबाद में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स यानी कि मोबाइल फूड लैब वैन के जरिए अलग अलग इलाकों में पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की मौके पर ही जांच की जा रही है। फूड डिपार्टमेंट की टीम लाइव पड़ताल कर रही है और इसी के तहत फूड डिपार्टमेंट की टीम एक पनीर शॉप पर पहुंची और मौके पर पनीर की गुणवत्ता की जांच की गई, क्वालिटी की जांच की गई। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर आनंद तिवारी भी यहां पर मौजूद थे। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के न्यू गढ़वाल पनीर शॉप के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सरप्राइज विजिट के लिए जो है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की टीम जो है खाद्य विभाग की यहाँ पर पहुंची है कि जो पनीर है उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए कि उसमें मिलावट तो नहीं है। ये फूड वैन जो है ये हर तरह के खाद्य पदार्थों की चेकिंग करती है। इसके अलावा पानी हो या जो मसाले हों उनकी भी गुणवत्ता को चेक करती है कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। देखिए यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम आसान मौजूद है और अभी ये न्यू गढ़वाल पनीर का जो है पनीर है वो यहाँ पर सैंपल के लिया गया है। देखिए यहाँ पर परगनली में ये पनीर को जो है वो डाला जा रहा है। और सर ये कैसे अब पता चलेगा? अभी हम पनीर हमने डाल लिया, इसके बाद इसमें हम आयोडीन टिंचर डालेंगे, आयोडीन लिक्विड सोल्यूशन डालेंगे जिसमें जो लगाते हैं। हाँ। तो इससे क्या होगा, इसके फिर हम 10 मिनट बाद रखेंगे तो इसमें हमें जानकारी मिल जाएगी कि इसमें कोई बाह्य पदार्थ की मिलावट तो नहीं है, स्टार्च वगैरह की, स्टार्च अरारोट वगैरह या कोई जो आटा मैदा या पाउडर या आलू का वो कोई भी। तो सर जरा डाल के देखते हैं। तो देखिए मेरे कैमरामैन जय आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो टिंचर है वो इसमें डाला है और ये पनीर देखिए पूरा अभी सफ़ेद कलर का है और अब इसका कलर जो है अभी ये टिंचर का कलर ब्राउन है सर। हाँ ब्राउन। अच्छा, और अगर कलर नहीं बदला तो सर तब ये सही है। अच्छा, और अगर ये नकली पनीर होगा अगर ये तो इसका कलर सर क्या हो जाएगा? ब्लू। हाँ ब्लू। अच्छा, वो कितनी देर में ये सैंपल हो जाता है सर परीक्षण? थोड़ा हो जाता है, ये लगभग 10 मिनट में देगा। अच्छा, तो देखिए 10 मिनट तो हम अभी इंतजार करते हैं जब तक हम सर से पता करते हैं कि सर ये तो हो गया कि चलिए आपने ये जो केमिकल है इसमें डाला जो आम चोट लगने पे लोग घरों में रखते हैं और इसका कलर ब्राउन या ब्लैकिश है। इसका लगभग ब्राउन ही है। और अगर ये 10 मिनट में ब्लू हो गया तब इसमें तो मतलब ये पनीर नकली है? नकली, इसमें स्टार्च की मात्रा है। अच्छा, स्टार्च की मतलब मिलावट है इसमें? हाँ मिलावट। अच्छा सर, ये जो वैन है आपकी फूड सेफ्टी वैन जो है ये और क्या क्या चीज़ों को परखने की क्षमता रखती है? आपकी जैसे मसाले हैं उसमें आपका कलर भी जांच कर देगी। अच्छा। और आपका दाल है उसमें भी कलर लगा है वो भी जांच कर लेगी, पानी की जांच कर लेगी। अच्छा। Presented by Hamdard Foods India. झारखंड सरकार ने मानी छात्रों की मांगे। सीएम हेमंत सोरेन ने किया टीडीपीएल और जेएसएससी सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान। 2014 से अब तक सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी। देवेंद्र महतो ने तोड़ा अनशन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान। नई टीम में वसुंधरा राजे और राम माधव समेत 13 लोग बने उपाध्यक्ष। स्मृति ईरानी समेत 8 महामंत्री नियुक्त। नितिन नबीन की नई टीम में 65 में 51 नए मेंबर, टीम में 12 महिलाएं शामिल। अगले साल चुनाव वाले यूपी से 8, उत्तराखंड गुजरात से 4 नाम। दिल्ली एम्स ने कहा ट्विशा ने आत्महत्या की, डेड बॉडी पर नहीं मिले मारपीट के निशान। सीबीआई की चार्जशीट में सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज हत्या का आरोप। दिल्ली की बुराड़ी में एक सूटकेस में मिला लड़की का शव। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार से दिल्ली लाई गई थी लड़की। हत्या की वजह जानने के लिए 3 लोगों से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने
डीजी एनटीए समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, हटाए गए एनटीए के 50 से ज्यादा कर्मचारी। एनटीए की टेक्निकल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी और परीक्षा से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लागू होगा नया स्ट्रक्चर। बातम्या आपण पाहणार आहोत. तुर्तास एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच परत येतोय. पाहत रहा न्यूज 18 मराठी, आवाज महाराष्ट्राचा. प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा. आणि बायोस्टॅट, खेती से ही जीवन है. ठळक बातम्या. प्रायोजक पीतांबरी देवभक्ती अगरबत्ती विथ नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स. एयू करंट अकाउंट सोबत मिळतात फ्री UPI QR, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी आणि एकाच ॲपने बँकेची सगळी कामे. विचार बदला आणि बँकही. रेड बसवर याहून 10 पट डिस्काउंट मिळतो रे. आई शपथ, खरं बोलतोय. अफलातून तिकीट डिस्काउंट घ्या रेड बसवर. माझी बस म्हणजे रेड बस. रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी. गेम बदलते, गेम बदलते. JK सुपर सिमेंट, बिल्ड स्ट्रॉंग. लग्न ठरलं थँक्स टू मराठी मॅट्रिमनी. थँक्स तर मला पण म्हणायला हवं मराठी मॅट्रिमनी मध्ये रजिस्टर करण्यासाठी. अगं थँक्स मला पण म्हणायला पाहिजे. 26 वर्षांपूर्वी मी मराठी मॅट्रिमनी मधून तुझ्या आईचं लग्न केलं होतं. लग्न म्हणजे मराठी मॅट्रिमनी. काय झालं? साधा सर्दी खोकला. गाजर कशी मिळाली? 100 रुपये किलो. गाजर 100 रुपये. सर्दी खोकला कधी साधा नसतो. वेळेवर घ्या चेस्टॉन. याचा P2DC फॉर्म्युला 15 मिनिटांमध्ये परिणाम दाखवायला सुरुवात करतो. चेस्टॉन तर तुमचं बेस्ट ऑन. This Independence Day, own Samsung Galaxy S series starting at ₹73 per day and Galaxy A series starting at just ₹50 per day. पूर्वी मला आईस्क्रीम खाल्ल्यावर दातांमध्ये झिंजिण्या यायच्या. तेव्हा माझ्या डेंटिस्टनी मला समजावलं की माझ्या दातांच्या वरचा थर झिजल्यामुळे मला दातांमध्ये झिंजिण्या येतात. म्हणूनच त्यांनी मला रोज सेन्सोडाईन वापरायला सांगितलं. सेन्सोडाईन दातांच्या आत जाऊन नसा शांत करतं. सेन्सोडाईन वर्क्स. भाई भाई चंपी कर रहे क्या? नहीं, सोलर लगवा रहा हूँ. क्या मजाक कर रहे हैं? क्या हुआ? वो देख, सोलर स्क्वायर. मेरे होम सोलर एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, मेरे सोलर का पूरा ध्यान रखते हैं. तभी तो सेविंग्स की गारंटी देते हैं, नहीं तो मनी बैक. इसलिए आप इतना कूल हो. सेविंग्स की गारंटी है, तभी माही कूल है. चल अब सोलर लगवाने दे. सोलर स्क्वायर, द श्योर सोलर. नंदिका काय झालं? शॉर्ट सर्किट झालं. इथे स्पेशलिस्टची गरज आहे. सामान्य वायर्स नाही, वायर्सचा स्पेशलिस्ट. KEI वायर्स अँड केबल्स. प्रत्येक टेन्शन सहन करतात, चालत राहतात. माझं गाव नदी काठी, नद्या दुधाच्या वाहती. माझं गाव नदी काठी, नद्या दुधाच्या वाहती. जिथं कोकिळ मंजुळ गाती, तुम्ही या हो या सारे माझ्या गावी. माझ्या गावचं मऊ लोणी, घरी सुख समृद्धी आणि आनंदी हो नाती गोती. झळके चमचम हिरे मोती माझ्या पदरावर. तुझ्या चेहऱ्याची लाली मनी येई गझळाळी. अंगणी दसरा दिवाळी, लक्ष्मी लावते कुंकू माझ्या वाळी. लक्ष्मी लावते कुंकू माझ्या वाळी. ओ लक्ष्मी लावते कुंकू माझ्या वाळी. लोकमान्य गोल्ड लोन माफक प्रक्रिया शुल्क आणि कमीत कमी कागदपत्रांसह तात्काळ मंजुरी. अधिक माहितीसाठी आमच्या नजीकच्या शाखेला भेट द्या किंवा कॉल करा 1800212450. नियम व अटी लागू. कापूर दे मित्र. देवासाठी फक्त मंगलम कापूर. कारण मंगलम जळल्यानंतर कोणताही डाग सोडत नाही. भेसळ नाही, फक्त मंगलम. मंगलम BLDC न्यू टेक
बजाजची आहे. बजाजचा विश्वास आजची BLDC बजाज. हिंदुस्तान भेटे हिंदुस्तानला. देशाचा टायर JK टायर. सकाळची पहिली मानाची आहे सर्व. जास्त स्क्रीन टाइमच्या सवयीमुळे तुमची मान खराब झाली का? म्हणूनच धूनपट्टा एक्टोफेनॅकची शक्तीवाला निमुलेट स्ट्रॉंग दुप्पट ऊर्जेने काम करण्यास सुरुवात करते आणि मानदुखीपासून आराम देते. मानेच्या दुखण्याचा तज्ञ निमुलेट स्ट्रॉंग जेल आणि स्प्रे. Hey Maya, let's go. The new BE6 Vortex. शिलाजी ताची पावर भारी. फुला फळांना ग्रोवर तारी. सत्व आकार वजनात भारी. अशी ग्रोवरची किमया न्यारी. शिलाजिताची पावर म्हणजेच पूर्वाचं ग्रोवर. फवारणीसाठी वापरा ग्रोवर आणि ड्रीप मधून वापरा ग्रोवर ड्रीप. अशी ग्रोवरची किमया न्यारी. SVC बँक घेऊन येत आहेत लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी 7.75% अधिक माहितीसाठी कॉल करा 1800-313-2120. नियम वरती लागू. हे आहे न्यूज 18 नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात न्यूज 18 मराठी, आवाज महाराष्ट्राचा. को पावर्ड बाय ग्रीन प्लाय, प्रत्येक गरजेचा रिप्लाय. अकरा महिन्यांपासून बंद असलेली मोनोरेल लवकरच सेवेत दाखल होणार. मार्गिकेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं सर्व चाचण्या पूर्ण. मुंबईतील गोरेगाव मुलुंड जोड रस्त्याच्या कामातील बोगद्याच्या कामाला सुरुवात. 3 लेनचा दुहेरी बोगदा बांधण्यात येणार. बोरिवली ते विरार दरम्यान 5वी-6वी मार्गिका 30% पूर्ण. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होणार. राज्यात पावसाचा जोर ऑगस्टमध्ये ओसरला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसानं मारली दडी. विदर्भ मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस. LPG ई-KYCला 23 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ. तांत्रिक अडचणींमुळे KYC करताना ग्राहक झाले होते त्रस्त. टपाल तिकिटावर घ्या गणपतीचं दर्शन. राज्य सरकार करणार 55 लाख रुपयांचा खर्च. रेल्वे स्थानकात थुंकणाऱ्यांना पश्चिम रेल्वेचा दणका. संबंधितांकडून 27,18,995 रुपयांचा दंड वसूल. मुंबईत पावसाळी आजाराच्या संख्येत वाढ. डेंग्यू मलेरियाचे रुग्ण मोठ्या संख्येनं वाढले. नागपूरमध्ये नाग नदीतील सांडपाण्यामुळे गोसेखुर्द धरण होत आहे प्रदूषित. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून गंभीर दखल. आणि आता नाशिकमधून मोठी बातमी. नाशिकमध्ये प्रेयसीनं मित्राच्या मदतीनं प्रियकराची गळा चिरून हत्या केल्याची घटना घडली आहे. यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी तब्बल 18 तास मृतदेह घरात ठेवला आणि त्यानंतर मध्यरात्री कसारा घाटात नेऊन मृतदेह आरोपींनी फेकला. वसंत गोरखनाथ सातपुते असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे. दारू आणि जुगाराचा नाद असल्याच्या वाद्यातून प्रेयसीनं मित्राच्या मदतीनं वसंतचा काटा काढल्याचा पोलिसांचा संशय आहे आणि या प्रकरणी हसीना शेख, मोईन शहा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तर नाशिकमध्ये ही घटना घडलेली आहे. प्रेयसीनं मित्राच्या मदतीनं आपल्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या केल्याची घटना घडली. यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी तब्बल 18 तास मृतदेह घरात ठेवण्यात आला.
त्यानंतर मध्यरात्री कसारा घाटात नेऊन मृतदेह आरोपींनी फेकला. वसंत गोरखनाथ सातपुते असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे. दारू आणि जुगाराचा नाद असल्याच्या वादातून प्रेयसीनं मित्राच्या मदतीनं वसंतचा काटा काढल्याचा पोलिसांना संशय आहे. तर या प्रकरणी हसीना शेख आणि मोईन शहा यांना पोलिसांनी सध्या ताब्यात घेतलेलं आहे. वर्ध्याच्या भोर अभयारण्यामध्ये सध्या वाघांचा मुक्त वावर पर्यटकांचं विशेष आकर्षण ठरतंय. रहाटी गेट परिसरातील जंगल क्षेत्रामध्ये पिंकी या वाघिणीचा नियमित वावर पर्यटकांना पाहायला मिळतोय. विराट आणि पिंकी या दोन्ही वाघांच्या वावरामुळे भोर अभयारण्यातील पर्यटनाला चांगलीच रंगत आलेली आहे. विशेषतः रहाटी गेट परिसरात वाघाचं दर्शन होण्याची शक्यता अधिक असल्यानं पर्यटकांची या भागाला विशेष पसंती मिळते. पावसाळ्याच्या दिवसात जंगलाचं सौंदर्य अधिक खुलून आलं असून हिरवाईनं नटलेल्या अभयारण्यामध्ये वाघांचं दर्शन घेण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे. तर वाघांचा मुक्त संचार आणि निसर्गरम्य वातावरण यामुळे भोर अभयारण्य पर्यटकांसाठी आकर्षणाचं केंद्र ठरते. या बातमीपत्रामध्ये मी आता इथेच थांबते. पुढचं महत्त्वाचं बातमीपत्र सुवर्णासह. थँक्यू प्राजक्ता. गुड मॉर्निंग. पुढच्या बुलेटिनकडे वळूया. सुरुवात हेडलाईन्स. हेडलाईन्स प्रायोजक रामबंधू लोणचे आणि पापड, जोडी शानदार. गडचिरोलीतील जबतलाई आश्रमशाळेची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द. आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांचा मोठा निर्णय. राज्य मंत्रिमंडळाची दुपारी बैठक. चाकण आणि नाशिकमधील रस्त्यांवरील खड्डे आणि गणेशोत्सवाबाबत चर्चा होण्याची शक्यता. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी. शिवसेना उबाठा गटाकडून सिब्बल आज पुन्हा करणार युक्तिवाद. बेस्ट कर्मचाऱ्यांकडून उपोषणाची हाक. प्रलंबित मागण्यांकरता बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा एल्गार. आंदोलनामुळे मुंबईकरांचे हाल होण्याची शक्यता. आणि माझे नेते नरेंद्र मोदीजी यांनी महाराष्ट्राची जबाबदारी माझ्याकडे दिलेली आहे. तारे तोडणाऱ्यांना तारे तोडू द्या, पण मी महाराष्ट्रातच आहे. दिल्ली दौऱ्यामुळे सुरू झालेल्या चर्चांनंतर मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना टोला. भाजपची नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर. विनोद तावडे महासचिवपदी तर पियुष गोयल यांची राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती. पंतप्रधान मोदींकडून अभिनंदन. ठाणेकरांना सोसावी लागणार करवाढ. मालमत्ता करात 12% वाढ. महापालिकेच्या महासभेत मोठा निर्णय. झारखंडमधील JSSC CGL परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा निर्णय. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश. बुलेटिनमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. काही महत्त्वाच्या घडामोडी सुरुवातीला बघूयात. एक ब्रेकिंग न्यूज गडचिरोलीतून. गडचिरोलीतील जबतलाई अनुदानित आश्रमशाळेची मान्यता अखेर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेली आहे. सर्पदंशामुळे 3 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर चौकशीत आश्रमशाळेतील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेपासून स्वच्छता, पिण्याचं पाणी आणि जेवणापर्यंत अनेक सुविधांचा अभाव आढळून आलेला आहे. त्यामुळे चौकशीमध्ये या गोष्टी नमूद झाल्या.
आणि मग कारवाई झालेली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून अनुदान घेतल्याचा ठपका सुद्धा या आश्रमशाळेवर ठेवण्यात आलेला आहे. घटनेच्या वेळी पुरेसे कर्मचारी उपस्थित नसल्याचंही समोर आलेलं आहे. या सगळ्या बाबींच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागानं आश्रमशाळेची मान्यताच कायमस्वरूपी रद्द करून टाकलेली आहे. विद्यार्थ्यांचं इतर आश्रमशाळांमध्ये समायोजन करण्याचे आदेश दिले गेलेले आहेत. दरम्यान या आश्रमशाळेमध्ये कोणकोणत्या त्रुटी आढळल्या ते आपण नजर टाकूया, पाहूयात. वसतिगृहामध्ये अपुरी सुरक्षा व्यवस्था, दरवाजे आणि खिडक्यांची दुरवस्था, खिडक्यांना आवश्यक जाळ्या नव्हत्या, संरक्षक भिंत केवळ 3.6 फूट 3.5 फुटाच्या दरम्यान होती. आश्रमशाळेत स्वच्छतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेलं आहे. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ही अपुऱ्या स्वरूपाची होती. विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत खोल्याही अपुऱ्या होत्या. शयनगृहाची कमतरता होती. सिक रूम आणि प्राथमोपचार पेटीची सुद्धा कमतरता होती. स्वतंत्र भोजनगृह नव्हतं. आमचे प्रतिनिधी सहकारी लक्ष्मण घाटोळ यांच्याशी आपण सविस्तर बोलूया. लक्ष्मण, ही बातमी आपण दाखवली, पाठपुरावा केला होता आणि किती असुविधांनी भरलेली ही आश्रमशाळा आहे तेही आपण दाखवलं होतं. मान्यता अखेर रद्द झाल्याचं कळतंय, काय अपडेट? सुवर्णा, खरं तर या सगळ्या घटनेमध्ये 3 विद्यार्थिनींचा मृत्यू झालेला होता सर्पदंशाने, आणि त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सगळं प्रकरण गांभीर्याने घेतलेलं होतं आणि त्यांनी या सगळ्या प्रकारानंतर राज्याच्या आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड यांना या सगळ्या प्रकरणामध्ये कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले होते. या सगळ्या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले होते आणि अखेर ज्या राज्याच्या आदिवासी आयुक्त आहे लीना बनसोड यांनी या सगळ्या प्रकरणामध्ये चौकशी केली आणि चौकशी अंती या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय काल उशिरापर्यंत घेण्यात आलेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही जपतलाई नावाची अनुदानित शाळा आहे. या अनुदानित शाळेमध्ये कोट्यावधी रुपयांचं अनुदान सरकारने दिलं, मात्र त्यानंतर देखील या शाळेमधल्या विद्यार्थ्यांना, आश्रमशाळेतल्या विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा देणं आश्रमशाळेने अपेक्षित होतं त्या सुविधा त्यांनी त्या ठिकाणी दिल्या नाही आणि विद्यार्थ्यांना सर्पदंश झाला. त्याची कारणं त्यांनी त्या अहवालामध्ये दिलेली आहे आणि जो ठपका त्यावर ठेवण्यात आला त्यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे या आश्रमशाळेमध्ये जी विद्यार्थ्यांची संख्या आहे त्या तुलनेत त्या ठिकाणी सुविधा नव्हती, स्वच्छतागृह नव्हते, राहण्यासाठी खोल्या नव्हत्या, झोपण्यासाठीची नीट व्यवस्था नव्हती आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सर्पदंश झाला. याचं कारण असं होतं की या विद्यार्थ्यांचे जे रूम होते, खोल्या होत्या, त्या खोल्यांना कुठल्याही प्रकारच्या खिडक्या, जाळ्या आणि दरवाजे नव्हते. त्यामुळे सर्प जो आहे तो अत्यंत या खोल्यांमध्ये किंवा या रूममध्ये या विद्यार्थ्यांचा सहज जाऊ शकता अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी आढळून आली आणि त्यामुळे राज्याच्या आदिवासी विभागानं या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. इतकंच नाही तर ज्यावेळेला ही घटना घडली त्यावेळेला त्या ठिकाणी अधीक्षक, महिला अधीक्षक उपस्थित नव्हते, कोणी वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते आणि त्याशिवाय या विद्यार्थ्यांना दवाखान्यामध्ये जर वेळेवर नेलं असतं तर त्यांचा जीव वाचू शकला असता, मात्र त्यांना वेळेवर नेण्यासाठीची व्यवस्था त्या ठिकाणी नव्हती. अशा प्रकारचा ठपका जो आहे तो देखील यामध्ये ठेवण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे. सुवर्ण, यामुळे एक गोष्ट अत्यंत प्रकर्षानं महत्त्वाची समोर आलेली आहे ती म्हणजे राज्यामध्ये कोट्यावधी रुपयांचं अनुदान या आश्रमशाळांना जेव्हा दिलं जातं तेव्हा मात्र ते अनुदान या शाळेचे संस्था चालक घरी घेऊन जातात का असा प्रश्न यामुळे उपस्थित केला जातो. कारण त्या विद्यार्थ्यांना इतका पैसा खर्च करून देखील सुविधा मिळत नाही, साधं स्वच्छतागृह नाही, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होत नाही आणि त्यामुळे राज्याच्या आदिवासी विभागानं ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे एकच आज या आश्रमशाळेवर कारवाई झाली आहे. राज्यातल्या इतर आश्रमशाळांची नेमकी काय परिस्थिती आहे त्यावर आदिवासी विभाग पुढच्या काळात कारवाई करणार का? नक्की. धन्यवाद, आपण सविस्तर माहिती दिलीत लक्ष्मण त्याबद्दल. बेस्ट कर्मचारी आजपासून आंदोलन करणार आहेत. कर्मचाऱ्यांचे पगार, वेतन श्रेणी, आर्थिक सहाय्य आणि सेवानिवृत्तीच्या थकबाकीबाबत प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन केलं जात आहे. प्रदीर्घ काळापासून कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे सातत्यानं दुर्लक्ष होत असल्यामुळे हे टोकाचं पाऊल, हे मोठं पाऊल उचललं गेलेलं आहे. युनियननं त्याची कल्पना दिली की प्रशासन मागण्या मान्य करेपर्यंत आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाहीये. बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी ही भूमिका मांडली आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाचा परिणाम वाहतुकीवर होण्याची शक्यता आहे.
एक बातमी सविस्तर आपण बघणार आहोत. महत्त्वाची बातमी आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बंडखोर खासदारांसंदर्भातली बातमी आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेतून शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेमध्ये दाखल झालेल्या बंडखोर खासदारांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. जून महिन्यामध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत गेले. 6 खासदारांच्या गटाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता पण दिली. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात खासदार अरविंद सावंत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करताना दिसले होते. नुकतेच 6 बंडखोर खासदार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष सोडून शिंदे गटामध्ये विलीन झाले. त्यांना लोकसभेचे अध्यक्ष माननीय ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिली. ती चुकीची आहे आणि त्याच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. लोकसभा अध्यक्ष व हे 6 बंडखोर खासदार ह्या 7 लोकांनी येत्या 31 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी ही नोटीस होती, ती आम्ही त्यांना सुपूर्द केलेली आहे त्यांच्या कार्यालयात. आता आपण सुपरफास्ट घडामोडींकडे वळूया. गेल्या 11 महिन्यांपासून बंद असलेली चेंबूर ते संत गाडगे महाराज चौक मोनोरेल मार्गिका लवकरच नव्यानं वाहतूक सेवेमध्ये दाखल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. असं असतानाच या मार्गिकेसाठीची प्रतीक्षा आणखी लांबली आहे. मोनोरेल ज्या उन्नत मार्गिकेवर धावते त्या मार्गिकेत मोकळी जागा आहे, त्यामुळे उंचावरून गाडीचा कोणताही भाग व इतर काहीही कोसळून दुर्घटना होऊ नये याकरता MMRDAनं मार्गिकेची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील कल्याण ते बदलापूर दरम्यानचा प्रवास पुढील 2 वर्षांमध्ये फास्ट ट्रॅकवर येणार आहे. या 2 स्थानकांदरम्यान 3ऱ्या आणि 4थ्या मार्गिकेचं काम मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत युद्ध पातळीवर केलं जात आहे. MUTP 3A अंतर्गत अतिरिक्त मार्गिकांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आलाय. अंदाजे 1510 कोटींचा खर्च असलेल्या या प्रकल्पाचं काम 52% पूर्ण झालंय. 2028 मध्ये दोन्ही मार्गिका प्रवासी सेवेमध्ये खुल्या करण्याचं नियोजन आहे. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या 12.20 किलोमीटर लांबीच्या गोरेगाव मुलुंड जोड रस्त्यामध्ये येणारा 5.30 किलोमीटरचा महाकाय बोगदा खोदायला सुरुवात झालेली आहे. या टनेल बोरिंग मशीनला तुळशी असं नाव देण्यात आलंय. या महाकाय बोगद्यामध्ये प्रत्येकी 3 लेनचा दुहेरी बोगदा बांधण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवरील बोरिवली विरार दरम्यानच्या 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचं 30% काम पूर्ण झालं. 2184 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे भविष्यात उपनगरीय तसंच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांकरता स्वतंत्र मार्गिका होणार आहेत. वीज चोरी विरुद्ध राज्यभरात मोहीम सुरू असून गेल्या 4 महिन्यांमध्ये घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि इतर वर्गवारीमध्ये 19,599 ठिकाणी वीज चोरी उघड झाली आहे. यामध्ये गेल्या जुलै महिन्यामध्ये पर्दाफाश झालेल्या 11,033 वीज चोऱ्यांचा समावेश आहे. येट तारेच्या हुकद्वारे आणि मीटरमध्ये फेरफार केलेल्या 15,965 प्रकरणांमध्ये 30 कोटी 36 लाख रुपयांची वीज चोरी झाल्याचं आढळून आलं, तर उर्वरित 3,000वर 634 प्रकरणांचं मूल्यांकन सुरू आहे. पाणी गळती आणि दूषित पाण्याची समस्या दूर करण्याकरता मुंबई महापालिकेने 244.49 कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतलाय. पश्चिम उपनगरामधील 10, पूर्व उपनगर आणि शहर विभागातील प्रत्येकी 6 वॉर्ड्समध्ये जलवाहिन्यांची दुरुस्ती सेवा, जोडण्याचं नूतनीकरण आणि झडप कक्षांची कामं केली जाणार आहेत. या कामांमुळे पाणी गळती कमी होऊन मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होण्याबरोबरच जलवाहिन्यांमध्ये दूषित पाणी मिसळण्याचा धोका कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणाची गणना प्रक्रिया अंतिम टप्प्यामध्ये पोहोचली आहे. सोमवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंतच्या जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण 9,78,54,049 मतदारांपैकी 7,69,52,262 मतदारांचं म्हणजे गणना अर्ज डिजिटाईज केल्याचं समोर आलेलं आहे.
तर 2,07,93,916 मतदारांचं अर्ज अद्याप संकलित झालेलेच नाहीयेत. न्यायाधीश, सनदी अधिकारी आणि अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तींकरता सिडकोनं जाहीर केलेल्या महानिवास गृहप्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष उभारणीचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. पाम बीच मार्गावरील सीबीडी बेलापूर इथल्या या प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार झालेला आहे. बांधकाम कंत्राटदार नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्यांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकानं चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि त्याबद्दलचा स्थितीदर्शक अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिले आहेत. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या दहीहंडी उत्सवाला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळवून देण्याकरता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. तसंच महाराष्ट्रातील गोविंदा पथकांना स्पेनमध्ये पाठवण्याचा मानस असल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी केली आहे. महापौर रितू तावडे यांच्या दैनंदिन कामकाजाची, कार्यक्रमांमधील उपस्थितीची, भेटीगाठी आणि पाहणी दौऱ्यांची माहिती समाज माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता महापौर कार्यालयानं सोशल मीडिया टीम तैनात केली आहे. या टीमची सेवा आणखी वर्षभर सुरू ठेवण्याकरता महापालिका 25,12,786 रुपये खर्च करणार आहे. मुंबईतील मुलुंड इथल्या शिवकृपा इमारतीला आग लागली. इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर लागलेल्या या आगीत 2 जण जखमी झाले. या आगीचं कारण अस्पष्ट आहे. महाराष्ट्रात पावसाचा जोर ऑगस्टमध्ये ओसरला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसानं दडी मारली. मुंबईसह कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सरासरीहून अधिक तर विदर्भ आणि मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालाय. मुंबईत हलक्या सरींचा अंदाज आहे. 17 ते 21 ऑगस्ट या 5 दिवसांच्या कालावधीमध्ये हवामानात मोठा बदल होणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनाही पाण्याचा त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता ज्येष्ठ हवामानशास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी व्यक्त केली आहे. गॅस सिलेंडरच्या ई-केवायसी करण्याची अंतिम मुदत एका आठवड्यानं वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना 23 ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी करता येईल. याआधी 16 ऑगस्ट अखेरची तारीख देण्यात आली होती. ई-केवायसीला मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी सध्या तांत्रिक अडचणींमुळे देशातील कोट्यवधी ग्राहकांना सर्व्हर डाऊन आणि ॲप बंद पडल्यानं मनस्ताप सहन करावा लागतोय. तसंच अनेक गॅस एजन्सीजवर लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र दिसतंय. भुसावळ शहरात सराफाच्या दुकानातून हातचलाखी करून सोन्याचे दागिने चोरून नेणाऱ्याला अटक करण्यात आली. मोहम्मद अली लियाकत अली सय्यद याला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्याकडून अंदाजे 5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. एक महत्त्वाची बातमी आहे. पुण्यामधली ही बातमी आहे. पुण्यामध्ये खड्डेमय रस्त्यामुळे आणखी एकाचा जीव गेला. बालेवाडी म्हाळुंगे रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे एका 11 वर्षाचा trading firm. Aluminum prices though have seen some profit taking coming into the markets, but all eyes now on the US Fed meeting minutes which are coming in on Wednesday, and then of course you have the Jackson Hole symposium that's happening in the last week of August. These two factors would tell you on where the markets are moving. Absolutely, Manisha. Thank you so much for that important cues to watch out for at the end of the month as well. But on that note, we're going to slip into a very short break. After the break, we'll come back, give you the latest from what's happening in West Asia. Stay tuned in. New feels good. New feels good. So true. This new feels good.
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। And nothing should stop our soldiers from marching forward. To make this possible, somewhere a strong bridge has been built. At Ultratech, India's #1 cement, we believe that to keep growing, India needs to keep building. Ultratech Cement. As India builds, India grows. अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर, थोड़ा ध्यान से। सर, आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। भारत में अब हर कोई एफएनओ सीखेगा। जी हाँ, आपके बेशुमार प्यार और भरपूर डिमांड की वजह से सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको मिलेगा मौका बाजार के दिग्गजों से एफएनओ सीखने का, वो भी सरल भाषा में। और सबसे अच्छी बात, इस वेबिनार में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। बस आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना होगा। तो मिलते हैं एफएनओ गुरुकुल में। रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग 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 बना रहे। धूप में भी तेरा रंग बना रहेगा रहेगा रे। रंगा ढंगा अतरंगा जो होना है वो तो होना ही है। रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा 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 मुस्कुरा। रंग 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 रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे। बोझे पेंट्स रंग बना रहे। ब्रो, इन्वेस्टिंग के लिए इंटेलिजेंट बनना है तो स्टॉक ट्यूटोरियल्स, मार्केट ट्रेनिंग, इन्फ्लुएंसर एडवाइस, एजुकेशनल वीडियोस। ब्रो, इन्वेस्टिंग के लिए तेरा ऐप इंटेलिजेंट होना चाहिए। ट्रेडिंग सिग्नल, स्मार्ट डिस्कवरी, सिक्योर एग्जिट, आस्क एंजल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome back. You're watching Power Breakfast on CNBC TV 18. Let's get you updates from West Asia then. US President Donald Trump stated that Iran ought to put up the white flag of surrender after the Memorandum of Understanding deadline passed on Monday. Trump also warned he would target Oman if the country hindered actions to reopen the Strait of Hormuz. Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And right now, them building one after what we did previously with the B-2 bombers, going to be a long time behalf. But Iran cannot have. It's very simple. They can't have a nuclear weapon. No, I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. Well, that was US President Donald Trump. Meanwhile, Iran Foreign Ministry spokesman Ismail Baghi said that the 60-day time frame tied to the June 17 memorandum between Tehran and Washington lost all meaning after the US broke the pact shortly after signing it. On the other side, Turkey's president urged US President Donald Trump during a phone call to keep diplomatic discussions with Iran active to make use of the current opportunity, stating that Turkey stood prepared to assist with the process. Elsewhere, the U.S. Central Command announced that the U.S. Navy turned away 64 commercial vessels in the Strait of Hormuz since mid-July. That's an update from West Asia. But what's happening in the U.S.? Wall Street opened up the week with a lower start with fresh Iran tensions, rattled markets, as well as sent the oil prices higher. Now, in a massive AI deal, NVIDIA will provide up to $105 billion in financing for a new OpenAI data center in Ohio. Let's go across to CNBC's Kate Rooney, who's here to give us a wrap on everything that's happened on Wall Street. Kate? Markets were fractionally lower to kick off the new week as new Iran tensions weighed on stocks. Oil prices were higher following the developments, and the 30-year Treasury yield hit its highest level since June 2007 as oil prices advanced. The Dow fell 272 points, S&P 500 dropped 40 points, and the tech-heavy Nasdaq shed 84 points.
NVIDIA will provide up to $105 billion in financing for a new artificial intelligence data center for OpenAI in Ohio. That's according to a securities filing on Monday. The credit will support an initial 4.25 gigawatts of computing capacity, with the option for an additional 3.75 gigawatts. And Paramount Skydance, in a new filing today, is seeking to force states holding up its merger with Warner Brothers Discovery to pay for the fees and costs associated with that delay. This is according to the filing, rather. Paramount is requesting a $1.9 billion bond that would be posted by the states behind that lawsuit, led by California Attorney General Rob Bonta. Under the terms of the merger, Paramount will owe Warner Brothers a so-called ticking fee of 25 cents per share per quarter until that deal closes, which translates to about $650 million per quarter. All right, thank you so much, Kate, for that update. Those were the global updates, but now let's slip into a break. Up next, we get you updates from the world of technology and artificial intelligence, so stay tuned. New feels good. New feels good. So true. This new feels good. जब एक इंडियन के हाथ में पावर आता है, 10,000 रन का माइलस्टोन पार हो जाता है। सोचो, जब हर इंडियन के हाथ में पावर आएगा, इंडिया कितने और माइलस्टोन पार करेगा। इसलिए योनो देता है हर इंडियन के हाथ में पावर। द ऑल न्यू योनो, पावर टू एवरी इंडियन। Infinitely more with Visa Power. शहीदों के अमर बलिदान और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का जन उत्सव हर घर तिरंगा एक बार फिर पूरे देश को राष्ट्र भक्ति के भाव से जोड़ने आ रहा है। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने वाले इस अभियान में उत्तर प्रदेश पूरे उत्साह के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान तथा शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करिए। सर्वप्रथम देश है, भाव ये लाएं, हर घर तिरंगा फहराएं। रंग 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 रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग 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 बना रहे। धूप में भी तेरा रंग बना रहेगा रहेगा रे, रंगा ढंगा अतरंगा। जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा 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 मुस्कुरा। रंग 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 रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे। बोझे पेंट्स रंग बना रहे। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से, सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। Welcome back to Power Breakfast on CNBC TV 18. Now let's get you the latest from the world of tech and AI in our special segment AI Pulse. Rachna has hopped onto the wall to give us the updates there. Rachna, over to you.
Well, first update that we're getting in from Washington is that Washington is preparing to tell partner countries to pick sides in the AI race against China. A draft letter warns the signatory companies, and India is among them. Now, the letter says joining Beijing's rival framework would mean exclusion from the US coalition. Then a crypto firm backed by Donald Trump is working with a Hong Kong venture selling access to Chinese AI models. A Reuters review found 43 of 90 models on the platform came from Alibaba and Baidu and Z.ai. The White House has denied any conflict of interest, though. Anthropic's revenue run rate has topped $65 billion, up from 47 in just May. And it is now projecting 2028 revenue between $190 to $200 billion, the forecast behind its IPO price. Then voice AI firm Whisper Flow is valued at $2 billion after a $280 million round backed by Peak 15. Whisper Flow was founded by Tanay Kothari and Sehaj Garg in 2021. And lastly, Sarvam's 14,257 crore rupee Odisha data center with HCL Tech is moving ahead, with HCL bearing a majority of that chunk. Sarvam co-founder Pratyush Kumar said the company is focused on the software layer but would still be investing some capital in the build-out. However, the Kaze glasses that broke the internet with the Prime Minister donning them in February and were demonstrated at the India AI Summit were slated for a launch this year in May have now been delayed on back of rising memory costs. Listen in. Combines India's current strength in these IT services with now we are looking at from an innovation point of view. The leadership is very, very supportive, and we in fact started working closely together. But this area will need more and more capital, and I think we'll continue to engage deeply with the company. Okay, that's the update coming in from the world of AI. But a quick look at in terms of the Asian markets, we've seen a further fall coming in, especially if you look at Kospi, Nikkei. All of them have now moved off the day's highest point. Even the Nikkei is down furthermore, 1.3% in trade. We have seen Kospi, which is now just holding on to gains of 0.6%. So clearly, Asian markets are also cooling off from the day's highest point. Will be key to watch out for over there, where that is going to be headed, as well as let's look at the Nifty implied open one more time. Right at the start of the show, it was down 80 points. Nifty implied open current indication will be key in terms of 98 points downtick. So a gap down start that continues. Furthermore, downtick that we've seen for the Nifty implied open. Today is going to be weekly expiry. Let's keep an eye out on that and in terms of volatility. But as of now, a gap down start for the Indian markets. But with that, we're absolutely out of time in this edition of Power Breakfast. Thank you so much for tuning in. Up next, we have Bazaar Morning Call to take you through all the market action. Brought to you by AU Small Finance Bank. ओए, इन्वेस्टिंग के लिए इंटेलिजेंट बनना है तो रूबिक्स क्यूब, जिगसॉ, सुडोकू, क्रॉसवर्ड। ओए, इन्वेस्टिंग के लिए तेरा ऐप इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐप? ट्रेडिंग सिग्नल, स्मार्ट डिस्कवरी, सिक्योर एग्जिट, आस्क एंजल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. An office space with just desks, chairs, and laptops? So last decade. Today's workspace is where we pitch ideas, but also swap a little banter. Where some strategies just need a chair slide, while others need uninterrupted focus. The best leaders know that a workspace isn't just a real estate decision. It's the vanguard of your business, an expression of who you are. Now, those leaders are getting candid in a special podcast series about making workspace the leadership lever for culture, collaboration, and growth. We Work India presents CNBC TV 18, The Titans. Coming soon. अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर, थोड़ा ध्यान से। सर, आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। रंग 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 रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग 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 बना रहे। धूप में भी तेरा रंग बना रहेगा रहेगा रे, रंगा ढंगा अतरंगा जो होना
तो होना ही है रंगीले तू सदा मुस्कुरा सदा 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 मुस्कुरा रंग 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 रंगीन रे देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे बोझे पेंट्स रंग बना रहे Tata Motors Commercial Vehicles presents Trucking into the Future, Season 3. For India to become Viksit Bharat by 2047, a strong, resilient, interconnected infrastructure backbone is unfolding. From highways and expressways to ports, railways, dams and power networks are taking shape at unprecedented scale, with roads acting as the first link in India's growth story. I think the logistic efficiency is what contributes the best for the outcome on the road project. Logistics is like blood in human body. It connects everything, it keeps everything alive for them to function. Execution on the ground ultimately determines the pace of India's infrastructure build-out. Every project completed depends on reliable material flow that doesn't stop. Across road construction and infrastructure projects, execution speed directly drives profitability. Tight timelines, milestone-linked payments, and delay penalties mean faster completion can significantly improve contractor margin. This is where productivity becomes a competitive advantage. Dependable execution and the continuous flow of materials are what keep projects moving at the speed India needs. At this scale, progress depends not just on what is built, but on delivering every project on time. That is where productivity unleashed will power the journey to Viksit Bharat. Trucking into the Future, Season 3. New feels good. New feels good. So true. This new feels good. Co-powered by the all-new YONO, power to every Indian. And Century Ply Total Cover, पूरे furniture का full cost वापस. In association with Mudhoot FinCorp, get easy and hassle-free gold loans. Every morning, the countdown begins for the markets with meticulous research and analysis designed to help you capitalize on the trading day. Beaming live from the CNBC TV 18 Motilal Oswal studio. Good morning. You're with us here on a fresh new edition of Bazaar Morning Call, coming to you live from the CNBC TV 18 Motilal Oswal studios. It's a Tuesday morning, lots to cover. Oil, unfortunately, is headed in the wrong direction. 90 plus this morning as we
kick things off. I'm Prashant. With me, my colleagues Nigel and Reema. Guys, hi. Morning. Hi, morning. Hi, morning. So crude prices are declining. Crude prices are rising, so $91 plus. And Asian markets too are on the back foot. So pull up the Japanese markets, that's down 1.5%. The Taiwanese markets lower by 0.5%, and the Korean markets too a bit subdued. Well, that's right. Prashant, let's get straight to the action then. Well, and I think action is, of course, what's happening with oil. And, so yeah, there you go on your screen. I don't think much needs to be said beyond just sort of, putting that rate up. We know, all the consequent implications of oil headed in the wrong direction. It's we like it, not like it. It's a big macro thing. And it flows through in so many other ways, through the macro channel, through the micro channel, et cetera, et cetera. Of course, one just hopes that it doesn't stay here. It's not as if there's any, there's a shortage of oil. There's enough oil, more oil. And we saw briefly what happens when the Strait of Hormuz opens. Prices collapse to $70. But the fact is, ships aren't passing through the Strait of Hormuz. There's no end in sight as far as the blockade is concerned. And that's an important shipping route. And that's the problem. Iran, in terms of just sort of news flow overnight, Iran seized a UAE-owned oil tanker in the Strait of Hormuz. And they said this yesterday in the last 24 hours or so, that Iran is now shifting its policy from a defensive one to a fully offensive one. So essentially, it's not going to be reaction-led. It's not going to be based on, in terms of reacting to stuff which comes their way, but they're going to be taking action first. So, and of course, there was President Trump who told Fox News that he's in no hurry to end the war with Iran. But of course, that one, you got to take it with a pinch of salt. But, there are lots of comments pretty much every day, and we don't know which way things will go in that sense. Trump, of course, also saying that Iran should, and I quote, put up the white flag of surrender. And of course, Iran's got is in no mood. He said, Trump essentially went on to say they're in talks with the IRGC, which is Islamic Revolutionary Guard. IRGC denied that they're in direct talks with the US. So it's more of the same. It's a muddle, and we don't know what's the way out going to be. Foreign policy experts, even out of the US, who cover the Middle East, etc. If you read a fair bit around this, the general consensus is it's not an easy solution. There is no solution which is like a clean win, clean victory for the US, and they kind of sort of walk away. The midterms, remember, are also approaching, and all of this is not helping. Gas prices and sentiment, etc. US equities were also lower. S&P 500 down about 0.5% or so. Of course, the other one was the 30-year yield in the US, which went up 5 basis points, about 5.3. It's the highest in almost 20 years, the highest since June of 2007. There were two other factors, which led to this bid as far as treasuries go, yields go. So stronger US data, the Empire manufacturing numbers came through, and there was, of course, heavy corporate issuance, which we've been highlighting earlier as well. So keeping yields bid a fair bit. I'll just leave you with levels, so it's not very much different from where we left off yesterday. Although we are closer to the support levels, we're actually pretty much at 24,300. And actually, the first one is 24,300, which is where, slightly above that level is where the Nifty left off yesterday. Below that is about 24,200, 24,220 or so, but 24,200 roughly is that level. On the upside, the first one is 24,400, and then, there's that trend line, which, because the market did not do very much, is still at about 24,450, 460. So those are levels, not very much changed from what we put out yesterday. GIFT Nifty comes up on your screen, gives you a quick sense of how we're likely to start, and then we move on from there. So yeah, I think that 24,300 and even 24,200 kind of levels, do they come into play and will they hold is the question. Nigel has walked across to the wall with the F&O cues and the positioning. Nigel. Well, after the kind of earnings season that we saw, you'd expect the markets actually to gradually move up. The problem is the fresh supply of paper. That's what's drying up liquidity, and that's what's weighing on the market. And this morning we have the other negative, which is Brent crude prices have perked up from around that $85, $88 per barrel mark. It's gone to around $91 per barrel mark. As we always wish, we hope that Brent crude prices go down from a bullish perspective.
Well, yesterday the cash session for the first time ever, that's the 3:15 to 3:30 session. After a while, or the first time ever, actually it went to the bears because the markets ended lower by close to around 52 points or thereabouts. So part of this bad news could have been factored in because of the cash session itself. So we'll have to see how that goes, given that the gift nifty is indicating some weakness to kickstart trade. Flows were mixed in yesterday's trading session, though the DI buy continues. But the problem, as I said earlier, is in fact this kind of liquidity that's getting sucked out by the QIPs, by the IPOs as well, and basically large trades. Well, moving to the FI data on index futures, well, the short positioning, that's moved up by around 4,700 contracts. And in the last few days, it's gradually been moving up by 30,000 contracts from the lows that we saw earlier. So the short positioning is moving closer to around the 2 lakh contracts or thereabouts. In percentage terms, from around that 86% odd mark that we saw just a few sessions ago, that's moved back to around 89%. So the short positioning has moved up and shorts are back in the system. Well, in terms of the index options, that's going to be important because today's a Tuesday, which means that the Nifty plays out the weekly expiry as well. And yesterday, there were more puts than calls that were written, closer around in the ratio of around 2 puts for every 1 call. Moving to the options data then, if you look at the strikes that were active, the 24,350 call added close on 30 lakh shares. The premium out there around 70 rupees, while on the downside, the 24,250 put, well, that premium is holding at around 20 rupees. But given that yesterday we saw the cash session, put us under some pressure and ended sub the 24,300 odd mark, and the gift nifty suggesting some weakness because Brent crude prices have moved up. I think the first reference point on the downside, by the end of today, you don't want this level of around 24,200 to break. That's going to be important to track. The 20 DMA, that becomes the first level of resistance on the way up. And otherwise, looking at the options data, given that the 24,350 call as well was fairly active, this becomes the resistance mark. So in terms of the band for the day, it's a 220-point band between the 24,200 mark and 24,420 odd mark. Brent crude prices, that's the niggling worry, as well as fresh supply of paper. Thank you very much for that. And now let's get to the latest on West Asia, and the rhetoric seems to be escalating. US President Donald Trump stated that Iran ought to put up the white flag of surrender after the 60-day memorandum of understanding deadline passed with no breakthrough on Monday. Trump also warned that he would target Oman if the country hindered actions to reopen the Strait of Hormuz. Listen in. Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And right now, them building one after what we did previously with the B-2 bombers, going to be a long time behalf. But Iran cannot have. It's very simple. They can't have a nuclear weapon. No, I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. Ed Yardeni, President Yardeni Research is now joining in. Ed, in just 10 days, it will be 6 months since the fighting in Middle East began. Protracted, this low, medium intensity warfare continues with no clear end date or an off-ramp. Is this the new economic reality? Do we sort of need to adjust to this semi-permanent state of hostilities in Middle East? What's your assessment now? I think that's a good question. And I think the answer is right now, it definitely seems so. When the war first broke out and I heard that the U.S. had managed to take out the main leaders of Iran, my initial reaction was that it would be a short war. And then the very next day, I thought about it some more and came to the conclusion that this may not be a short war, that at the end of the day, we're really going to be dealing with the IRGC. And the IRGC is, for all practical purposes, they are a professional terrorist group that's taken over a country. And they are not particularly concerned about the pain they are causing their fellow citizens. As we know, they're willing to kill their fellow citizens if they object to what their policies are. This could be protracted. This may mean that the U.S. continues to blockade Iranian ports and tries to come up with other means to choke off the economy of Iran. And meanwhile, the IRGC is do whatever they can to keep the Strait of Hormuz closed. But it is fascinating that the price of oil hasn't gone up a lot more, which does suggest that, well, oil is liquid, and one way or the other, it's pouring out of the Middle East.
It's not just getting through. Ed, morning. Good to have you with us here. On bond yields, especially on the long end of the US, how do you read it, the 30-year? Well, I am concerned, but not too concerned. I've been thinking that the 10-year government bond yield would in fact be ranging between 4% and 5% over the rest of this year and into the next couple of years. And the idea is, people keep saying that interest rates are going to stay higher longer. Actually, interest rates are where they should be. Higher longer implies they should be coming down, but the 10-year bond yield was 4 to 5%, and when it was normal, it was normal before the great financial crisis. It was also between 4 and 5%. And before the great inflation of the 1970s, it was 4 to 5%. 4 to 5% is a sign that the economy is healthy, that the capital markets are working as they should be working. So I'm not particularly concerned at this point, but doesn't mean that others aren't. Clearly, there's a lot of nervousness about the fact that the 30-year bond yield is the highest it's been since 2007. But again, that's when the bond yields were normal. The only thing is interest rates are where they should be. Are stock prices where they should be? Question mark, Ed, in relation to where bond yields are at. Well, it's funny. I'm actually just writing for my quick takes for tonight after this interview. I'm writing a piece on the possibility that the old relationship between stocks and bonds may be coming back. I called it the Fed stock valuation model. And it does suggest that the bond market may very well be back as an important variable in determining the forward PE, the valuation multiple of the market. And at even if we got to 5%, 1 divided by 5, the reciprocal would be basically the valuation multiple of the bond market, and that would be 20, which is where the valuation multiple of the stock market is right now. So the stock market right now is actually fairly valued relative to the bond market at around 7,800. All right, Ed, giving all the cues that we have, if you had to be allocating fresh money to the U.S. markets, between U.S. markets and gold, I recall, you were quite bullish on the S&P 500 as well. And a lot of the levels that you've given us have got taken out. If you're putting fresh money, given the correction that we've seen in gold, as well as the kind of momentum we've seen in the U.S. stock markets, what would the allocation be? Well, in the stock market, I am still bullish on the S&P 500 for the end of the year. I actually raised it to 8,400 because of earnings. I've been told that I'm the most bullish on the street, and my response is actually I'm not. It's the analysts that are the most bullish on the streets. They keep raising their earnings numbers, and so I'm kind of following them. Within the S&P 500 or the stock market broadly, I've got AI fatigue. I think everybody's a little tired of it. It's hard to kind of figure out who's going to win and who's going to lose. I think technology, broadly speaking, will win, and the NASDAQ 100 makes a lot of sense as a way to play that. Other than that, I'd like to play the areas of the market, companies that will benefit from using AI, and that's financials, life insurance companies, property insurance companies are already using it to reduce their costs. Industrials will continue to build the AI infrastructure, and the hospital, the healthcare system, I think, clearly could use a lot of productivity booms related to using AI. And with regards to gold, I thought before the war started that gold would get to 5,500 by year end. Then the war hit, and much to my surprise, the price of gold actually went down on that because some central banks had to sell gold in order to prop up their currencies, and that kind of got a lot of weak hands out of the gold market. I think it made an important support level at 4,000, and I'm not looking for 5,000 by year end, and I'm still using 10,000 by the end of the decade. All right, Ed, we'll leave it there. Thank you very much for joining us. Good speaking with you, and we look forward to that note. Send us those quick takes. We'd love to read them. But interesting point there. But it's also interesting what you're saying, that, I mean, relative to bond, stocks are fine, at least where they are.
at this point. We'll take a quick break, but just running you through interactions which are lined up on the program. 9 o'clock, we'll be joined by Gaurav Malhotra of Access Capital. We focus on the telecom space. 9:20, Nilesh of Envision Capital as a market master of the day. 9:30, management of Patanjali Foods will join in to break down their June quarter earnings. The management of Park Hotels speaking with us at 9:40 on their first quarter earnings. 9:50, excerpts from our conversation with the management of Dixon Tech on the sidelines of the Motilal conference. Lata speaks with Harendra Kumar of Velara on first quarter earnings and the takeaway for the full year earnings growth outlook. Well, time to slip in a quick break. We've got a lot of stock-specific action to track for you. We'll get to that in just a bit in our special Top 10 segment. We're looking at Indomim, Oberoi Realty, Manipal Health, Sigma Advanced Systems, as well as GMR Airports. All of them will be reacting to positive news flow, while you have Paytm, NetWeb, SPR Auto Technologies, Sigil India will be reacting to negative news flow, and a mixed reaction on Colgate. Take that break. We get into further detail on all of these next. New feels good. New feels good. So true. This new feels good. यार, how are you so relaxed? मार्केट का अपडेट नहीं देखा? मैं तो सिटीजन हूँ ना। सिटीजन? मतलब? जो म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हैं उन्हें सिटीजन कहते हैं। और मार्केट वॉलेटिलिटी? सिटीजन्स को मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। फिर तो मैं भी बनूंगी सिटीजन। सिप करो, सिटीजन बनो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग 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 बना रहे। धूप में भी तेरा रंग बना रहेगा रहेगा रे। रंगा ढंगा अतरंगा जो होना है वो तो होना ही है। रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा 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 मुस्कुरा। रंग 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 रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे। बोझे पेंट्स रंग बना रहे। Look, this investment Guru's tips will double your money. Just claim the offer. Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. Well said, well said, well said. NSE advice: consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. Invest कर। We are very, very confident about what we are doing. If you come to Shaadi.com, अगर आपको response नहीं मिले, within 30 days we give you 100% money back guarantee. Lalita Jewelry Mart Limited launches an initial public offer of equity shares of face value of 5 rupees each in the price band of 190 rupees to 201 rupees per equity share. Bid offer opens on Monday, August 17, 2026. Closes on Wednesday, August 19, 2026. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated August 9, 2026. Available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. Welcome back. The Gift Nifty is lower by nearly 100 points, reacting to the increase in crude prices. Brent today is at $91 per barrel plus versus yesterday's level of $89 per barrel. It's just that once we open lower, keep your eye on yesterday's intraday low
of 24,227. From there, there was that effective bounce which took place before the market sold off in the last 10 minutes on account of gas. So let's see whether we can protect that level of 24,227, the intraday low yesterday, the lowest since 30th of July. But let's talk about stocks then. Our research team is standing by with CNBC TV 18's list of top stocks for the day. Good morning, everyone. Vivek, why don't you go first? Paytm, NetWeb and Shriram Pistons in focus. Well, that's right. Good morning. Just as we've concluded, the earnings season, a whole host of equity supplies on the cards. First on the list is Paytm. A large block deal of close to 4,900 crores is expected to transpire in today's trading session. The seller over here is Resilient Asset Management. The offer floor price is set at a little less than 3% discount, indicating that there is a chance that this particular block deal may happen in the block window itself. The base offer size is 3% of the equity, and the upsize option is a further 1.98% of total equity. There is a lockup of 90 days on further sale of shares. There was a clarification from the company to the exchanges last evening that the final economic interest of this particular block deal proceeds will actually be going to Antfin, that holds OCDs in Resilient. The other stock on the radar is SPR Auto Technologies, earlier known as Shriram Pistons. A QIP has been launched for a fundraise of up to 1,000 crore rupees. The indicative price range at the lower end of the band is 4,216 rupees a share, indicating close to 5% discount to yesterday's close. The equity dilution at the lower end is at close to 5.4% of the total equity. And lastly, Network Technologies, again, a QIP has been launched for a fundraise, total QIP size of up to 1,200 crore rupees. Closed a little over 25 lakh shares is expected to be issued. Indicative issue price at the lower end of the price band is at close to 4,710 rupees a share, implying a little less than 10% discount to yesterday's close. Expect a mild red in all of these names at the open, but especially Paytm could expect a rebound, especially if it happens in the block window. Got it. Thanks a lot for that, Vivek. Well, let's hop across to Sudarshan. He's here to tell us about a newly listed company that reported their numbers, Indomim. Hey, sir, morning. Morning, Nigel. So first quarter earnings by Indomim after the strong listing that company had said. It's operationally very strong quarter. It's looking like company has seen margin improvement both on a sequential basis as well as YY. And sequentially, just if you take a look at revenue, it has grown in double digits, up almost 16%. But YY revenue was up 9%. EBITDA has jumped by 25%. And margin, unlike other companies, this company has seen margin improvement both sequentially and YY. And margin has come at 33.4% versus 29.4% in the same quarter last year. But keep in mind, stock has seen a huge run. Issue price was 485, had listed at a premium of 44%. Now from issue price, the stock is up almost 80%. But on the basis of earnings, I'm going with green. It's been a stellar run, but earnings are solid. So we'll see how this one responds. So thank you very much for that. Oberoi Realty next in focus. Sonal is here with details. Sonal, morning. Good morning, Prashant. There is some relief coming in from Oberoi Realty. Remember, they launched their first ever NCR project back in June, and they had made good sales there. But there was a Haryana order from second week of July, which did not allow Oberoi Realty to go ahead with phase 2. Now, the DTCP, which is Department of Town and Country Planning, Haryana, has upheld Oberoi Realty's developer rights, and it has rejected the complaint which was seeking removal of Oberoi Realty as one of the developer, and change of developer is ruled in favor of Oberoi Realty. High Court also removed all the restriction on further allotments of the remaining phase and the remaining units as well. And a company says existing sales and operations will remain unaffected, the 8,600 crore sales that they'd made earlier, and also it will have no adverse impact on their financials. Now, do remember back in June, they had made sales of around 8,100 crore rupees. The total project value was 16,000 crore rupees. So that 8,000 crore rupees was at risk, but now that risk is removed, and that's why some relief is expected on Oberoi Realty. The stock was higher in trade yesterday, could continue today as well. Got it. All right. Thanks a lot for that, Sonal. Well, hopping across to Ria. She's here to tell us about some stocks that are on the news. Hey, Ria. Hi, good morning. Let's focus on Manipal Health first. The company will be buying Kinder Women's Hospital and Fertility Center for 130 crore rupees. And through this, they will be acquiring the entire business operations and assets of Kinder Hospital. Now, in FY26, the hospital had a revenue of nearly 21 crore rupees. And the current capacity is 100 beds. And this acquisition will be completed in 90 days. So, Manipal Health expected to be in focus on the back of that. There's also Sigma Advanced Systems that will be in focus, as the consortium with Indrajal has
won an order worth 145 crore rupees and a separate order for 10 crore rupees as well, through which they will be establishing anti-drone patrolling of border and urban areas. And lastly, IIFL Finance also in focus today on the back of a rating upgrade. Fitch has upgraded the company to its long-term rating to a BB minus from their earlier B plus rating, and the outlook for this remains stable. So all of these stocks expected to open in the green today. Thank you very much for that. Now let's go across to Vivek for more stocks in the news. Well, a couple of more stocks in the news. GMR Airports is one. Remember, the company that had earlier won the contract to go ahead and operate the Bhogapuram Airport in Visakhapatnam in Andhra Pradesh. Yesterday has commenced operations. This particular airport has a capacity initially of 6 million passengers that they can handle annually. Remember, this adds to the company's current passenger handling capacity of a little over 150 million passengers. The other stock on the radar is Seagull, a setback coming in for this particular name. Public Works Department Delhi has gone ahead and cancelled the L1 bidder status, or the lowest bidder status of the company in select projects. The company was the lowest bidder with a bid of over 330 crore in select road projects in South Zone in the Public Works Department. So this particular order cancellation comes in as a setback. Thank you very much for that. And Vinny now joins in to tell us about Colgate's conference call takeaways. Vinny, what stood out? Hi, so yes, there was an investor day that was held yesterday by Colgate. Now, mainly the highlights that are coming in here, they're focusing more on growth versus profitability. So you will see some trade-off coming in for the margins because they want to focus on premiumization as well as increasing the consumption trends. So that's the key highlight that's coming here. Now, in terms of details, the ad spends in Q1 FY27 was around 16% of their sales. They want to furthermore keep on increasing that and putting more money into the premiumization categories. 3 categories that they will be focusing on in terms of premiumization on the brands will be Colgate Total, Colgate Visible White Purple, as well as Colgate Perio Grade, which they'll be focusing on. Apart from that, the company's also spoken about premiumization becoming their core engine from here on as well. So yes, margins will be a bit of a trade-off in the near term, but growth is what they're going to be focusing on. Premiumization is what they're going to be focusing on. And the strategy continues to be increasing and more focus on the tier 2, tier 3 cities as well, and increasing their base in that city as well. So apart from that, they've also announced Palmolive's underperformance that has been there. Now, because of that, they've announced a strategic partnership with the Bombay Shaving Company, mainly for e-commerce as well as D2C side only, and globally also the global portfolio which is there for Colgate in the B2C category, BPC categories, I beg your pardon. That is also something that they will be focusing on. This is confirmed from the Colgate parent company as well as the India team. So maybe we could be seeing some brands coming in there as well. Okay, all right. And they're also talking about lifting, the total number of population that are brushing twice a day from around 24% higher. While in rural India, the current toothbrush penetration has moved to around 55% from around 45%. Thanks, Vinny, for giving us all those takeaways from that meet. Well, let's run you through a quick recap of all the stocks we just focused on, the ones with positive news flow: Indomim, Oberoi Realty, Manipal Health, Sigma Advanced Systems, and GMR Airports. While stocks with negative news flow: Paytm, NetWeb, SPR Auto Technologies, as well as Seagull. The one that could react mixed is Colgate. That's about all the equity market action. For the time being, though, let's turn our attention to the commodity markets. And Manisha Gupta joins us to help us out with exactly that. Hey, Manisha, good morning. Morning, Nigel. Thank you for that. I'll start with the crude oil prices, where we're looking at prices now trading above $91 a barrel. There has been a strong gain in the overnight market. Well, this is after U.S. says that they are not interested in extending interim truce with Iran that was agreed upon in the month of June. You also are witnessing renewed fighting in Lebanon. The vessel attacks on Strait of Hormuz are disrupting shipping therein. And the U.S. heating oil prices also are now trading at an April high. So almost everywhere that you see under the energy category is trading in the positive. But the base metals and the precious metal prices also have been on the higher side. This is after the dollar index is trading at a 3-month lows. The soft U.S. economic data has cut the Fed tightening expectations. And then it also is about renewed Middle East tensions that have led to some safe haven, tangible commodity buying. So gold and silver trading in the positive. Copper prices gained quite strongly on tightening global supplies. We also are looking at markets looking forward to Fed meeting minutes that comes in on Wednesday, and the Jackson Hole Symposium and the Fed chair testimony therein comes in the last week of August. So these are the two things that the street will now take cues from.
Thank you very much for that. That's the commodity and the economic triggers to watch, which will move equities and commodities. Get into a break. On the other side, we'll connect with Mayuresh Joshi of MarketSmith India for some fundamental stock talk. Lalita Jewellery Mart Limited launches an initial public offer of equity shares of face value of 5 rupees each in the price band of 190 rupees to 201 rupees per equity share. Bid offer opens on Monday, August 17, 2026. Closes on Wednesday, August 19, 2026. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated August 9, 2026. Available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. बाइसन पैनल मांगा था और तूने बेचा नकली वाला, तो पड़ेगी ना जनता की मार। बाइसन पैनल ओरिजिनल ही लो जी। रंग 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 रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग 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 बना रहे। धूप में भी तेरा रंग बना रहेगा रहेगा रे, रंगा ढंगा अतरंगा। जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा 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 मुस्कुरा। रंग 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 रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे। बोझे पेंट्स रंग बना रहे। एक बिजनेसमैन का सिर बस एक आदमी के सामने झुकता है, लोन मैनेजर। सर, ये मुथूट फिनकॉर्प है। यहाँ लोन के लिए शाहरुख के चाम की जरूरत नहीं है। ऐसे ही डायलॉग करवा रहा है तुझे। लोन अप्रूव्ड। मुथूट फिनकॉर्प, बुक योर गोल्ड लोन टुडे। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। Dear bestie, how can I thank you? They say the truest friendships cannot be manufactured. They simply unfold naturally. How true that is for us, bestie. Love from Bestie Collection. Natural diamond bracelets for you and your bestie. बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। Okay, welcome back. The GIFT Nifty should come up on your screen. Take a quick look at what's happening. And, I think still about 90, 95 odd points lower at this point, 90 points lower. So 24,300 around on the GIFT Nifty. Now, the government has cleared 31 approvals worth over 7,800 crores under the Electronics Component Manufacturing Scheme. My colleague Ashmit filed this report on the contours of how this will work. So let's just go across to him. Ashmit, take it away. Well, the government granting the latest tranche of approvals as far as the ECMS or the Electronic Component Manufacturing Scheme is concerned. In the latest tranche of approvals, as many as 31 projects have been approved with a cumulative investment of over 7,800 crore rupees. And among the projects that have been approved, well, there are listed entities as well. There's a subsidiary of the Wipro group that has received an approval for investments of over 1,400 crore rupees. There's a subsidiary of the Minda Corp that has secured an approval. There's Sirma SGS, there's Centum Electronics, as well as PCBL Chemicals getting approval for one of their projects. Now, what's important is that the message from the government is that we've far exceeded expectations. Ashwini Vaishnav was here speaking at the ECMS event, where he clearly pointed out that the initial target was having cumulative investments of about 60,000 crore rupees with total production of about 4.5 lakh crore rupees. Today he said that they've exceeded those targets. The cumulative investment now stands at about 70,000 crore rupees with total production
of nearly 5.5 lakh crore rupees. These are numbers that Ashwini Vaishnav said will not do justice to the ECMS story. He went on to press the private sector that there are 3 to 4 key areas that the private sector needs to work on. Appeal being made for ensuring that local designing is happening here within the country, local supply chains, ensuring a focus on quality as well as talent development. 4 key thrust areas being identified by the government for the private sector. Thanks a lot for that, Ashmit. But let's hop across to Hormuz. He's here with big movers yesterday. Hey, Hormuz, good morning. Morning, Nigel. And yet another day yesterday where the participation in the cash was not as significant as it was last Thursday. But today things might change because it is the weekly expiry. Yet another day where the turnover was less than 1,000 crore as well. Take a look at the top 5 names as well. The highest turnover too for HDFC Bank was less than 50 crore in yesterday's trading session. Bharatiya Airtel ended below its reference price, a turnover of 40 crore. ICICI Bank around about its reference price as well, same turnover of around 40 crore. Big divergence was seen in Mahindra and Mahindra though. The reference price was above 3,400. The closing price was 3,390 in yesterday's trade. But again, participation being scarce for around about 22 crore itself. You take go beyond cash, of course, there were plenty of other stock-specific movers. Hindustan Copper was one such name. The stock was up 8% in yesterday's session. Well over close to 3 crore shares were traded yesterday on Hindustan Copper. The 20-day average was around about 85 lakh shares, and a third of those were marked for delivery. So around about 92 lakh shares on the delivery front, the 20-day average of around 26 lakh shares as well. Ipca Labs was a strong management commentary reaction during the earnings call. They ended 9% higher. 70 lakh shares were traded on Ipca Labs. The 20-day average is only 2.8 lakh shares, and 20% of those were marked for delivery. So 13.5 lakh shares on the delivery front. The 20-day average here is only 1.2 lakh shares. And lastly, on the downside, Zaggle ended in a 20% circuit, a lower circuit at that in yesterday's session. 1.2 crore shares were traded, and the 20-day average is only 5.5 lakh shares. And even then, 40% of those shares for delivery, 50 lakh shares on the delivery front, the 20-day average less than 3 lakh. Thank you very much for that. In fact, let me ask Mayuresh Joshi, who's now joining in on Zaggle. Very, very disappointing, Mayuresh and Zaggle. I don't know if you've had a look at the stock and the numbers. Stock closed at 160, below the IPO price. All-time high level was 591, which means a 70% drop from its record levels. And the complaint that we got from market experts we spoke to yesterday is that the company, in a way, should have guided or communicated that this is going to be a weak quarter. Acquisition costs will weigh on the company's profitability. It came as a bit of a surprise. What is your view of Zaggle and what's transpired, and where does it go from this level of 160? Morning, Rima. No, two things. One, I think in terms of what the market expectations were and what the delivery was as far as earnings was concerned, it was not at all anticipated. And the markets, as we all know, do not like surprises, and therefore the reaction that you've probably seen on the stock. Obviously, I think the expectations in terms of how these synergies will play out over a longer period of time, and the core business expected to continue on a steady state basis will happen. But I think it's now going to take some time, as the management has probably put forth. And therefore, the markets will now reset the expectations that they probably got. The expectations largely were runaway growth that is expected to happen over the next few quarters, which clearly gets muted down to a large extent, exit 27. And therefore, I think how the company performs, specifically in the second half, when it probably comes to all these facts and figures put together, is going to be extremely critical. However, I think in terms of the reaction, our own sense is that it might go through a very, very long phase of consolidation. Right. Hi, Mayuresh. Good to see you in. Mayuresh, what do you make of Manipal? The issue price was a little south of 600 rupees. There were question marks with regard to the kind of money that they were looking to raise, the demand out there as well. And the grey market premium wasn't too much. But post-listing, in fact, the stock has done quite well. And now there is some inorganic growth. They are buying Kinder Women's a hospital and fertility center for around 130 crores. What's your view on the stock? There was an argument that it wasn't cheap, but a stock that wasn't cheap actually has rallied post its IPO. Morning, Nigel. Yes, and I think it's remaining expensive in that sense. Having said that, I think the kind of numbers that Manipal has probably posted so far, I think has been very, very encouraging. But I think if you probably look at a large part of the peer group itself, I think the numbers have been very, very steady state.
Apollo Hospitals reported a very decent set of numbers, in my opinion. Max had a very steady show. Again, I think one of the outliers within the space has been Yatharth Hospitals, which has probably delivered very strong returns so far. And therefore, for Manipal in particular, that you ask, I think the expectations in terms of the matured hospitals actually doing well, and the growth that they're probably embedding into in terms of core parameters over the next few quarters. I think it's a very calibrated growth that they're probably penciling in. And therefore, I think numbers should hold up. However, I think the strong underpinning that remains as a key risk factor for the sector is going to be the new norms that the government has probably put through in terms of caps. How does that play out in terms of the entire revenue growth? I think there have been a lot of pro and con arguments against how that white paper has probably circulated and how does it hit hospital profitability going forward if it is implemented in the way that it is envisaged right now. I think that might have a say in terms of forward-looking numbers as well. So I think decent set so far, the entire hospital pack has delivered, but the underpinning and the biggest risk factor is going to be if the white paper is implemented, there is a risk in terms of the upsides, in terms of profitability. You know, in a bit from now, Mayuresh, we had a hospitals town hall yesterday, and we had all the top hospital companies with us. Sorry, do we have it? Okay, I think we have it. So right on cue, Mayuresh, right? I mean, at the hospital's sort of town hall yesterday, we had the 4 top hospital companies. We had Max, we had Fortis, we had Narayana Health, we also had Jupiter, which is more Mumbai-centric. And we want to play out some sound bites out of this, and you may want to listen to this. So the first talking point, of course, I mean, front and center was the parliamentary panel recommendations prescribing lower cost via capping of room tariffs and a lot more. Here is a view from these CEOs and founders of these hospital companies and chains. This report is worrisome, and it is worrisome because of the kind of thought which has gone in it. I think it is probably based more on anecdotal instances on which the report has been made. So there are a lot of dichotomies in the report. One side, we are saying that India is a destination for medical tourism and we should promote it. Why? Because we are very economically, we are providing the best quality services. On the other side, we are saying that the healthcare is very expensive. I think we are confusing the two issues of affordability and the actual real cost of delivering healthcare. So I think the report needs to be evaluated a little more in detail. And there are certain elements of it which probably are implementable, and there are certain elements which are not. But the parliamentary report is only a suggestive report, and the policy decision, of course, has to be taken by the government. I believe that they will be a little more rational and they would do wider consultation with the industry before they decide on what to do. I think the profitability of, if you look at every listed player, my argument would be that the largest players and those profitable ones are the listed ones, and their financials are a lot more transparent. So the median sort of profit after tax is about 8%. And I think it varies anything from 4 to 13%. And whilst I agree with Ekta about the EBITDA numbers and the revenue numbers increasing, keep in mind that this is not a services sector alone. This is a bricks and mortar business. So profit after tax, because we have real depreciation, the buildings depreciate, the equipment is there for about 10 years, that depreciates. So profit after tax is the right sort of indicator. And 8% median profit after tax, or an outlier being at 13%, is not really egregious. And it is not really out of the park from that standpoint. And if you do less than that, I think it is going to stifle investment into the sector. And, you're going to have issues as far as capital investment is concerned. Now, if you look at the costs, I think costs are a function of inflation, both on the variable side as well as the fixed side. And we have to solve for the person who's going to put up that hospital next, okay, because that is so required. As the baby boomer population in India, which is average age is 29, it shifts to 43, which is the European age over the next 15 years. I think, we need to have about 10 times the number of beds.
And if we are not going to be providing a basic risk-free return, okay, to any investor today. Abhay, on that point, and I think what you said, some of the other metrics, net profit you say is the correct one. But look at return on capital employed, for example. I mean, 22, 23, 24% on mature assets. I mean, that's a pretty healthy return, right? So you're absolutely right. But, please look at it in context. I'm not leaning this way or that way. I'm just pushing back against that net. I completely agree with you and understand. But keep in mind, if you're going to look at the return on capital employed of a hospital which was put up 30 years ago or 20 years ago is going to be very different from what is being set up today. A hospital which is being set up today takes into account the current prices of land, the current cost of construction, and so on. It takes you about 4 years to construct. And yes, 20 years later, that particular hospital may give you a 20% ROCE. But the fact is, at present, and if you actually see, everybody's return on capital have come down by 40 to 50%. Because people are expanding, because people are sort of moving up, on the capex cycle. So you have to solve for whatever is being set up today, not what has been set up. And look, price is always formed by the marginal player, is by the people who are setting up hospitals today. Cap the room rates. It does not address the core problem that the government wants, which is healthcare is unaffordable for a vast majority of people. That is because people are paying out of pocket, which is not sustainable for a country of our size. We have to start looking at different methods of payment, such as insurance or employers paying for healthcare. The report specifically points out that the bottom of the pyramid is covered by government schemes, and they are not really concerned about that anymore. The top of the pyramid is taken care of by the insurance schemes because they can afford to buy them. Some of the government employees are taken care by CGHS, but it's the missing middle who pay out of pocket, as Viren just pointed out, who need support. And the report specifically outlines how health insurance must step up and become more affordable and widen the base for these missing middle populations. So I think this is a definite positive from the report, which helps. That is the portion as far as the parliamentary panel recommendations are concerned. And I mean, of course, hospital companies and hospital CEOs pushing back and kind of sort of explaining this with what they think should be done. Some, of course, part in some way of the recommendations, others, of course, not there. Viren Shetty of Narayana Health addressed the expansion in hospital bed capacity needed and why capping room tariffs was going to hurt that capacity addition ambition. Remember, over the next 5 years, just from the private listed players, that is, some 30,000 plus rooms are coming up. 30,000 plus beds are coming up. That's the capacity addition cycle we're looking at. Listen in. If hospitals didn't make any money, we won't be able to build more hospitals or hire doctors or keep in business. Now, given a choice, every single hospital would expand 10 times its size. But it is constrained by geography, constrained by its borrowing ability. And so the entire sector goes through these ebbs and flows. There was a time you mentioned where there was a crunch in capacity, and so everyone added and took investment and expanded. And then people start to ask, where's the return on this money? And then everyone stopped and waited for it. We're in this phase where, as India, which is the fastest growing country in the world, and as Abhay and everyone else has noticed that there is a tremendous need for healthcare, there's requirement in all the cities. The tier 2, tier 3 towns have a tremendous requirement. Now, whether or not it is profitable to do so is tomorrow's question. The ones who are making the investment do it based on the opportunity that they see. Okay, well, sticking with the capacity addition point, from a shareholder point of view, many believe that the industry, that is the hospital sector, the listed hospital universe, it may be underbuilding for the long term because, I mean, we need many more beds, but is it overbuilding in the short run? And is that going to affect shareholder returns, return ratios, etc.? This is Abhay Soi of Max and Ashutosh Raghuvanshi of Fortis, addressing this. Listen in. The larger micro markets of metros, as Ankit pointed out, are very complex and different in nature, and there are opportunities within these markets. So it is natural for most of the groups who have adjacencies, who have a presence and brand value established in these markets, they will focus on those markets first. But
lot of groups are extending themselves into other markets as well. And there are many cities which earlier were considered tier 2, tier 3, where you would see that a lot of infrastructure started coming up. I mean, if I can say, Abhay himself is going in Lucknow, Bhubaneswar, and many other markets, and so are we. So I think a lot of that capacity will come in tier 2, tier 3 cities, but 30,000 beds is not going to be enough. Okay. What about If I can just add, today's oversupply is tomorrow's very well thought out decision because they plan for the future. No, I want to be absolutely clear. Lest I be accused of, wanting lesser hospital. I mean, of course, I'm more than welcome. But that question was simply from a perspective of, shareholders are not. So I just want to add to what the debate. If you look at the Delhi NCR market, and interestingly, that's supposed to be a market where you had the maximum amount of supply of quality beds in India, right? But if you actually see the number of tertiary care beds in the private sector in Delhi NCR is about 11 to 12,000 total beds, right? Again, I'm going to compare it to the UK. The population of National Capital Region, NCR, is 85% of UK's population. And like I said, it's 200,000 beds, the 12,000 beds. Okay, I don't see the 12,000, even if you add your entire 30,000, which you're adding across India to Delhi NCR in the next 5 years. Okay, and by that virtue, you get to 100,000 in the next 15 years. You're still half of UK's supply at that point in time, even if you take a lower amount of affordability.